since we have some international scholars also here to present their research papers, I thought of starting in English, basically. Then I will switch over to Hindi. Hope it is fine with you all. Sir, include Hindi also. Yeah. Please. Where? From where? From where I'm listening? Yeah, okay. Compare it and say, sir. Sure, no problem. Yeah. यहाँ पे उपस्थित सब रिसर्च स्कॉलरों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज यहाँ पे सिर्फ यहाँ के लोग नहीं हैं, इंटरनेशनली इराक से भी रिसर्च स्कॉलर्स जुड़े हुए हैं। इसके वजह से मैं अंग्रेजी और हिंदी में हिंदी को मिक्स करके बीच बीच में रूपांतरण भी करके आपसे बात करूंगा। होप दैट इज फाइन विथ यू। कोशिश करता हूँ कि मैं आप तक पहुँचूँ दोनों भाषाओं के द्वारा। यहाँ पे सब रिसर्च स्कॉलर्स बैठे हुए हैं और डॉक्टरेट्स बैठे हुए हैं और मेरे को बताया गया है कि आज पूरा दिन इसी रिसर्च पेपर्स के मध्य पूरा दिन हम लोग यहाँ पे बिताना पड़ेगा और बेस्ट रिसर्च पेपर्स को आज शाम को बेसिकली अवार्ड्स दिया जाएगा। सो बेसिकली रिसर्च, व्हेन वी टॉक ऑफ रिसर्च, research has a set pattern. Research doesn't mean you come and speak whatever you feel like. मतलब आप जो भी मर्जी आप जो भी अपना मर्जी बोलना चाहते हैं वो रिसर्च कभी नहीं बनती है। रिसर्च के लिए सेट पैरामीटर्स हैं। अगर आप वो सेट पैरामीटर्स का जानकारी लेंगे तो आप जितने भी चाहे PhDs उतना सारे PhDs कर सकते हैं। वही रिसर्च के लिए एक मूल मंत्र है। Basically, research has a set methodology, and one needs to follow that set methodology. And once you know the methodology, and once you know the research design, then you can do any number of PhDs. Number of PhDs is not a big thing, but real contribution of research to our society, to our economy, to our country, to our international community is very important. Okay, so basically रिसर्च का महत्व तभी बनती है जब वो रिसर्च से कुछ देश के लिए बने या कुछ राज्य के लिए बने या कुछ इंटरनेशनल अर्थव्यवस्था के लिए कुछ तरक्की करने के लिए उसका कंट्रीब्यूशन हो। रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि हम पेपर्स इकट्ठा करके जोड़े और कुछ लिखे या उससे कोई मतलब नहीं बनता है। इसी के वजह से रिसर्च अगर आप स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज से करते हैं तो आपको पता चलता है कि उन यूनिवर्सिटीज में जिन यूनिवर्सिटीज से मैंने किया था उन यूनिवर्सिटीज में मेरे साथ पढ़ाया गया कि बेसिकली रिसर्च का कंट्रीब्यूशन देश के लिए होना चाहिए, कम्युनिटी के लिए होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो रिसर्च पास नहीं होता है। ओके, टुवर्ड्स द एंड आप जितने भी कोशिश करो, जितने भी मेहनत करो, वो मेहनत का फल नहीं मिलेगा। तो बेसिकली व्हाट इज दैट रिसर्च? इफ यू वांट टू नो, रिसर्च बेसिकली इज अ पजल, इज अ क्वेश्चन। You need to take a question and then try to answer it from various angles, and then after answering it, not just providing the answer is your duty, but after providing the answer, you need to take it further by providing the solutions for the various problems that you have come across while doing the research, and take it up forward by giving valuable recommendations to your community, to your state, to your nation, to your international community and the world across. Then only the value of the research will get a kind of credibility. Otherwise, there is no validity for bringing out books and for bringing out theses and from bringing out research papers by cutting and pasting from here or by copying and paraphrasing from here and there. That's not research. You use your brains, you use evidence-based methodology, and then do something. Then you can become a real great scholar in the international arena. That should be the aim of research. That's why I tell you, where we generally lack good research is
we people don't go for evidence-based research. Research should always be evidence-based. किसी ने आया बोल दिया मैं ये सोचता हूँ मैं वो सोचता हूँ, वो रिसर्च नहीं है, वो आपका सोच है, वो रिसर्च कभी नहीं बनती है। और उसी तरह मैं ये अखबार पढ़ लिया, वो अखबार पढ़ लिया, वो मैगजीन पढ़ लिया, ये मैगजीन पढ़ लिया, वो भी रिसर्च नहीं है। ओके, वो किसी ने अपना ओपिनियन वो मैगजीन में दिया और वो अखबार में दिया, उसके द्वारा शायद वो ये भी कोशिश कर रहा होगा कि आपके मन को इन्फ्लुएंस करे। ओके, दैट्स कॉल्ड एज परसेप्शन मैपिंग डन बाय some intellectual crooks who wants to put their ideas into your mind. That is also not research. You shouldn't copy it. What you should do, what is research, is when you do a peer-grouped, peer-reviewed articles, and when you study those peer-reviewed, peer-group articles, and then take a crux from there and paraphrase it in your own words, and from there you emulate a research question, research proposition, then only it becomes what we call the basis for your research. Research करने के लिए आपको peer-reviewed articles, peer-reviewed journals और ISSN, ISBN journals जो होते हैं और जो high quality के journals होते हैं, वो journals में आप basically articles आपके subject के बारे में जो जितने भी articles मिलता है उसके लिए आप गूगल स्कॉलर यूज कर सकते हैं, या नहीं तो बहुत सारा डेटाबेसेस हैं लाइक प्राइम डेटाबेस, लाइक प्रोक्वेस्ट डेटाबेस, और हर एक यूनिवर्सिटी तरह तरह के डेटाबेसेस प्रोवाइड करती हैं अब्रॉड, पर्टिकुलरली अब्रॉड यूनिवर्सिटीज। बट इंडियन कंटेक्स्ट में अभी तक वो डेटाबेसेस प्रोवाइड करना रिसर्चर्स को फ्रीली, वो कॉन्सेप्ट अभी तक शुरुआत नहीं हुआ है। ओके, इसी के वजह से तकलीफ ज़्यादा होती है इंडिया में एक विस्तृत, आई मीन टू से टू फाइंड आउट ए सोल्यूशन फॉर ए प्रॉब्लम। दैट्स द रीजन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हियर टेंड टू अडॉप्ट द हिस्टोरिकल रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च। मतलब कोई बुक्स पढ़ लिया, उसी से कुछ लिख लिया, वो रिसर्च बना के PhDs पाते हैं। उसके वजह से हिंदुस्तान में कोई क्रांतिकारी, मतलब जो रिसर्च समाज के लिए उपयोग हो, उस तरह का रिसर्च हिंदुस्तान से हमको बहुत कम संख्या में देखने के लिए मिलता है। तो इसी के वजह से बेसिकली एवरी वन ऑफ यू शुड कीप इन माइंड दैट द रिसर्च शुड बेसिकली बी एविडेंस बेस्ड। एविडेंस बेस्ड मीन्स you take the basis for your research question from the peer-reviewed journals of first order, okay, high quality journals, and from there you construct your research question. After constructing the research question, then you have to think of research design. That research design is, how should I conduct this research? When you want to conduct the research, there are three kinds of methods. One is qualitative, one is quantitative, third one is a mix of both qualitative and quantitative, mixed methods. Okay, qualitative methods का मतलब सिर्फ क्वालिटेटिव है, उसके अंदर कोई स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिकल मॉडल्स नहीं होते हैं, सिर्फ क्वालिटेटिव होते हैं। और क्वांटिटेटिव मतलब उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स जोड़ के हम लोग कोशिश करते हैं कि जो रिसर्च क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और रिसर्च क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए स्टैटिस्टिक्स के साथ जोड़ के एविडेंस बेस्ड बनाते हैं, डेटा बेस्ड बनाते हैं। और कुछ लोग दोनों लेते हैं, क्वालिटेटिव भी लेते हैं, क्वांटिटेटिव भी लेते हैं, दोनों लेके मिक्स्ड मेथड रिसर्च मेथोडोलॉजी अपनाते हैं। ये तीनों मेथोडोलॉजीज में कोई भी मेथड आप अपना सकते हो और रिसर्च आपका आगे बढ़ा सकते हो। जो रिसर्च क्वेश्चन आपने डिराइव किया अपनी रिसर्च से, जो पीर रिव्यूड जर्नल्स पढ़ के आपने जो रिसर्च क्वेश्चन डिराइव किया, उसको आगे बढ़ाने में ये मेथोडोलॉजी एक की इट्स अ की थिंग इन योर रिसर्च। ओके, और बाद में then we need to look at the data support. See, generally qualitative research is not given that importance world over. Though it is considered to be research, PhDs will be awarded, but the question here is when you talk of qualitative,
you don't be what you call proving anything. You just will be basing your conclusion based on some statements that you have taken from the journals or some materials here and there. But in concrete, it is not going to prove any particular substance, or it's not going to tell what should be done. Just now I was reviewing some economics papers here. I was given 3-4 shortlisted papers. When I was reading, there were 3 papers from Iraq. Since the Vice Chancellor Bushra ji is also here, I'm trying to mention that here. And there is one paper from some students from Orissa. I was so impressed with the students from Orissa. I don't know their names, but because research doesn't see names, okay? So when I saw the research paper, it was of very high quality. Though they are from Orissa, the way they have done the abstract, the way they have presented their methodology, the way they have brought in the quantitative techniques, that is to say the standard error methodology, and then again by associating that data inputs and the statistical analysis with their theoretical question, they have come out with good conclusions, and those conclusions led to recommend to the Orissa state government that, hey, you focus on these districts, and from these districts we can improve the agricultural output substantially if we diversify in this manner. This is the way those students very excellently brought out the concepts. I really appreciate them, if at all they are here. And similarly, from the Iraqi students, out of 3 papers that I have read in a short span, one student was very, extraordinary. He was focusing on how the Iraqi economy was spoiled by the invasion of USA, and why that kind of invasions are dangerous for Iraq and the Gulf region all across. Actually, if you look at that's slightly emotional also, because any country has its own sovereignty, okay? Just because somebody is big in size, big in GDP, whatever it is, they cannot go and just bombard some other country. What's the fault of Iraq? Iraq didn't have any chemical weapons of mass destruction, but it was the illusion, it was the misnomer, it was the mistaken thinking on the part of US presidential incumbent at that time, and he with his own whims and fancies went and attacked Iraq and destroyed the whole country, its economy, and now for that economy to recover, they are not participating. It is the Iraqis who should again reconstruct their economy, but destruction was done. But the destructive forces should also help to a maximum extent in reconstructing their own country. That's what they are doing. So in that research, I could see a real emotion of a citizen of their country who is really trying to find why the problem has arisen and what solution he has to find. But madam, that could be a great research if that researcher adds some data to support that. Then it will be a great research. Yeah, that's what is my suggestion over there. Yeah. So these 2 are the examples I am taking just to explain to you how a research would be useful for the society, our country, and how they can be structured in the right way to give some fruits to our society back. Okay. And then एनालिटिकल टेक्निक्स जो हम लोग यूज करते हैं, वो एनालिटिकल टेक्निक्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंस लेते हैं रिसर्च में, बिकॉज एनालिटिकल टेक्निक्स मीन्स जस्ट नॉट स्टैटिस्टिक्स. There are many advanced models now, okay? There are many advanced models, not only in statistics, but also in operational research. Operational research को भी statistics के साथ जोड़ा गया है, तो ऑपरेशनल रिसर्च मॉडल्स को भी आप अपना सकते हो. वो ऑपरेशनल रिसर्च मॉडल्स को रिसर्च कॉन्सेप्ट्स के साथ जोड़ के आप मैथमेटिकल मॉडल्स के द्वारा मतलब रिसर्च प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन दे सकते हो. दैट इज द रीजन जब भी आप रिसर्च के बारे में सोचेंगे, ये सेट पैटर्न में आपका रिसर्च आगे बढ़ाइए. और अंत में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी रिसर्च का क्रेडिबिलिटी उस रिसर्च में जो रेफरेंसेस एंड में कोट किया जाएगा वो नाम के वास्ते के लिए नहीं है. वो आपका जो रिसर्च आपने जो किया
वो रिसर्च का क्वालिटी पहचानने के लिए है। मतलब आप किस तरह का बुक्स पढ़े हो, आप किस तरह का रेफरेंस मैगजीन्स पढ़ चुके हो, या किस तरह का पीर रिव्यूड जर्नल्स पढ़े हो, वो सब आप इकट्ठा करके रेफरेंसेस के रूप में देते हो अंत में। मगर कोई भी एवेल्युएटर फ्रॉम अब्रॉड, फर्स्ट व्हाट ही विल डू इज he will first see the references, how far these references are relevant to your research। कुछ लोग नाम के लिए क्या करते हैं, कहीं से कुछ रेफरेंसेस इकट्ठा करके, कहीं से कुछ रेफरेंसेस इकट्ठा करके अंत में लगा देते हैं। But the real evaluators, what do they do is, when they read your research, they also correlate your research with your references. Is there any genuine research or not? Is it a fake research or not? That can be easily determined by a person, whoever has grip on the real research design. Okay, that's the reason reference. You just give me any book written by anybody or any thesis given by anybody, I can just tell you in 2 minutes whether it is original, copied, or a plagiarized, or anything of that sort. I can easily tell with the kind of experience I gained in the research. Okay, that's the reason one person may think that he has done a great work, but please don't think that way. It may be great for you, but to a layman it tells you what kind of work you have done. That's the reason, please be cautious whenever you do research. Always keep integrity, keep thinking that you should not copy, but you can paraphrase, you can take the material from others, but that you have to interpret in your own language. That is the reason even in today's time, UGC also has implemented the plagiarism as the major determinant for finding out the quality of any research. Even Indian universities also have started that any thesis with say certain percentage of plagiarism, they don't pass that's the reason one should not copy it. Even if you want to copy it, you should paraphrase it. Means you should see from your own eyes and try to interpret that in your own language. Then only it will not be considered as a copied research. Okay. So with that, in a short and sweet way, I just would like to conclude my speech and give time to you all for presenting your papers. I'll be patiently listening to you all. Okay. Thank you very much.